तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर नहीं लग रहा मुझे। हैव यू पुट द वैल्यूज? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, आप वो वाला कह रहे हो, उसका तो बी है, वो तो हो गया। ओके, ओके, सो दे हैव इक्वल रेंजेस। 45 वाले की तो मैक्स होगी, और बाकी जो दोनों हैं वो तो बहुत ही easy है। समझ नहीं आया। अब मैंने इन तीनों की जैसे साइन टू थीटा में वैल्यू पुट कर दी। करेक्ट, साइन 60 की क्या आई? साइन दिखानी। 6, एक सेकंड में देखा। √3/2। हाँ, तो इसमें पहले वाले की आई √3/30 डिग्री वाले की आई ठीक रूट है, थ्री बाई टू यू स्क्वायर बाई जी। राइट। और 45 वाले की आई यू स्क्वायर बाई जी। तो, तो आंसर क्या हुआ फिर? तो आंसर है कि आर वो बी की ए और सी की इक्वल है लेकिन बी की छोटी है। एंड लेस देन दैट ऑफ बी। बी इज द हाँ। मैक्सिमा। हाँ। ओके, आई वाज वेटिंग फॉर यू टू पुट अ टिक ऑन दिस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट रीजनिंग असर्शन। इसमें मुझे एक का आंसर गलत लग रहा है, मतलब सारे ऑप्शन जो है। पहले डिस्कस कर लेते हैं यार, 16th को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट्स योर आंसर, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। क्या आंसर है बताओ? लिखे नहीं कहीं पे तुमने, आई कांट सी। इसका आंसर मुझे वो लग नहीं रहा है चॉइसेस में से। अच्छा, किसका? 16th वाले का। ओके, द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, assertion is wrong. वही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो assertion is false, एक तो ये आ गया। लेकिन रीजन नहीं लग रहा मुझे। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग रीजन। ये रीजन थोड़ी ना है, मतलब दोनों ही गलत है। कोई लिंक भी नहीं उनका आपस में। द क्लोजेस्ट करेक्ट आंसर इज डी। हाँ, यही कह सकते परफेक्ट, हैं, डी कह सकते हैं। परफेक्शन नहीं होगी आंसर में। हाँ। ठीक है, अगला। ठीक है। ठीक है, वो भी गलत कर दो। हम्म, इसमें दोनों करेक्ट हैं, एक। ओके, लेट्स सी। टू पार्टिकल्स, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट करते जाओ। हम्म,
हाँ जी, क्या हो गया? कुछ नहीं। ओके, the maximum is square of velocity, the max 18th is correct. सही आंसर है, करेक्ट आंसर. ठीक है। करेक्ट है, 19th is C. वेरी गुड आंसर्स. यस सर। हेलो। हेलो। हेलो।
ये गर्वित आर यू देयर? यस सर। ओके, फिर से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। हम्म। पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, भिखारी बिठा दो, हाँ, हो गया काम। हाँ जी, नेक्स्ट। ठीक। 20th। हम्म। फॉर कितना एंगल है? 10 इनवर्स 4 है, ठीक है। तो यू हाँ। नो थीटा, राइट? सो यस सर। रेंज का फॉर्मूला लिख लो और हाइट का फॉर्मूला लिख लो। हम्म। रेंज का क्या फॉर्मूला है और हाइट का? उसमें थीटा हम्म। आता है ना दोनों में। हाँ आता है। तो यू नो tan थीटा इज गिवन टू बी 4, मतलब यू आर गिवन दिस टू बी 4:1, सो दिस इज √20 17। करेक्ट। तो साइन थीटा भी निकल जाएगा इससे। करो कंपेयर, रेंज और हाइट का फॉर्मूला लिखो, करो। यस सर। गॉट इट ना? हाँ समझ। Indirect way of giving you theta and then complete the triangle in that. हम्म। अच्छा, it's a cloud. You're doing somewhere? बस एक। Okay. कॉपी में कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो बस थोड़ा रफ डायग्राम बनाया था कि कैसे होता Okay. मुझे नहीं। Which one are you doing now? 17th? Last? 20। 20th, sorry. ठीक है। Yesterday again got calls for. सर आपका इंटरनेट अटक रहा है काफी। नेट क्या हो रहा अटक रहा है काफी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। है? ओके, मैं म्यूट पे चला जाता हूँ यार। इज इट बेटर नाउ? हाँ अब ठीक है। मैंने कंप्लेंट करी।
हाँ जी गुरप्रीत, यस सर। डन। बस हो गया। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट थोड़ा सा थीटा डालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। यू कैन सी द इवन इफ यू डिवाइड द प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। अच्छा, tan इनवर्स के लिए पहले तुम you're finding whether they're equal or not. Both are, yes, okay. Both are directly proportional to u square and inversely proportional to, okay. आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर बाय जी तो आ गया। और बट उसका वो निकाल लो ना, इस रेंज इज इक्वल टू वो साइन टू थीटा। साइन टू थीटा यू नो बाय ट्रिग्नोमेट्री इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। हम्म cos थीटा। साइन थीटा निकाल लिए 4 अपॉन, और कॉस थीटा कितना है? हाँ ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सी क्या आता है आंसर। ठीक है। लैंग्वेज देखो कैसी, स्ट्रेन लैंग्वेज, हम्म ट्रिकी। यस सर। 8 यू स्क्वायर बाय 17 जी आ रहा है। ओके, 8u square, okay, and what about the height? हाइट में इक्वल भी आ कुछ भी रही है, 4/1 मेरे ख्याल से तो ये इक्वल इक्वल आएगी साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना आ रहा है? 4 ना। 4/√17 हाँ, तो ये बन जाएगा 16, बाय 17। और एक 2 भी है नीचे, वो 8 को काट देगा। उस 8 बन जाएगा नहीं। हाँ 8 हाँ, बन 8 जाएगा बन ठीक है। जाएगा। 8/17 हो गया। यस, बोथ आर। यही तो रीजन है कि वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तभी तो ये सब कट गया। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। ए, the horizontal range is equal to maximum height, and because द ये थोड़ा ना रीजन है, द नहीं यही रीजन है। करेक्ट है। वी हैव टू एंड द मैक्सिमम। मेरा मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये जो वर्ड इसने यूज करा था, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर एंगल वो 45 डिग्री वाला नहीं बोला इसने। नहीं नहीं। ठीक है, सही है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसका ये समझ नहीं आ रहा कि इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये assertion। द मैक्सिमम हेलो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इन तो 45 डिग्री पे होती है ना, हेलो। 45 डिग्रीज पे होती है ना वो तो। हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अब भाई हाँ। आई एम पूरी। सेइंग द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, हम्म। ये जो वर्ड है, हाँ ये तो जनरली 45 डिग्री के लिए यूज होता है ना। द हाँ इसलिए तो मैक्सिमम, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। हाँ, इसका मैक्सिमम से क्या लेना देना है, दैट्स माय। बी आंसर हो गया। हाँ, although calculation wise he is justified in what they're doing. हम्म एक मैंने राइट पे वो दिया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दैट आर मैक्स इज इक्वल टू 4h। राजा, पानी डालना है इसके अंदर।
फ्लश में ना भर दियो बाल्टी। अरे राइट पे है क्वेश्चन। हम्म क्या? सेम अप्रोच, यू जस्ट राइट, बस इसमें आर मैक्स क्लियरली दिया हुआ है, तो थीटा 45 ही लेना। लेना है। फिर आर और एच की वैल्यूज निकाल लो, उनको डिवाइड कर लो। ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई विल डू। आपने वो किताब मंगा ली जो मैंने आपको बोली थी फिजिक्स की एक? तो सर उसमें वो पूछना था कि उसमें आपने तो 2022 वाला भेजा था, लेकिन उसका 24 का भी मिल रहा है। ले लो, वो लेटेस्ट लो, ठीक है। कंप्लीट करनी है वो बुक। ठीक है। घर आ जाऊंगा तुम्हारे में, पूरी नहीं हुई तो वो। ठीक है सर। हाँ, समझ लेना। अब तुम्हारे यस साथ सर। मैं टाइट होने वाला हूँ। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से लगाम दे दी है, अब तुम्हें समझ में आता है, मैंने देख लिया। यस सर। वो केस नहीं है कि म- मतलब आता नहीं है, नहीं काफी नहीं। समझ जाए अच्छा खासा। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है। so let's draw a circle. Okay, and let's say let me see if they have a circle. सर्कल ठीक से नहीं बन रहा यार, अब ठीक लग रहा है? हाँ ठीक। All right, ओवल सा है, पर ठीक है। fair enough. So let's see if this is the center of the circle हम्म and this is the radius. Okay, then at any point on the motion, the direction of velocity is perpendicular to the radius. Okay, so ओके। for example, this body is moving in this direction, which is clockwise. ठीक Okay, है। so what we are studying is called as a uniform circular motion. ठीक है। Uniform circular means the word uniform means the velocity everywhere, magnitude wise. If you calculate the velocity everywhere is same. ओके सर। Okay, which means you may be moving with 4 meter per second in a circle. Okay, so in this motion, the velocity is always tangent to the radius. Circle जो velocity है वो हमेशा टेंजेंट बनाती है। सर्कल इज अ कर्व और उसके ऊपर टेंजेंट बना लेते हैं, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है। ऑलवेज। सो लेट्स, दिस इज ऑल्सो रेडियस। ओके, ओके सर। so this is a case where you are moving continuously with a linear velocity of v meter per second, and every time you try to go straight, okay, there is a source of centripetal acceleration which keeps you in the circle. अगर वो सोर्स चला जाए तो बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रोप एंड अ स्टोन, right, or a case of horizontal circle, then
if you are moving the thread, for example, in a horizontal circle, which means parallel to the ground, if you leave it, if you cut the rope, the stone will fly off like this. ठीक है. On a ground, horizontal circle means parallel to earth. This is your earth's surface. You standing here, and you are also making the move in a horizontal fashion, not vertical. A vertical circle is this. Up and down, height is gained. But a horizontal circle is like this. So you have a thread and you're making it revolve in a circular motion with a constant linear velocity. If you cut it here, for example, you cut this rope at this point, it will fly off like this. Okay. If you cut it here, it was going here, it will fly off. Fly off actually means if you, for example, cut it at some position on the horizontal circle. So this is your horizontal circle parallel to earth. If you cut it here, it will go tangentially and then go as a projectile, because it will have a horizontal velocity, which will be this, and the balance of the velocity is going to be coming from the gravity. So it will take a projectile motion if it is cut parallel to the ground. So we are seeing the top view. हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, okay? तो वो circle ऐसे नजर आ रहा है हमको. We are seeing from our eyes are here, horizontal. So this diagram is the top view, which you see as a big circle. If you want to find out what is a velocity, is same. Magnitude wise, everywhere it is 4 meters per second. Example, can be 5, 6, 7, 8, 9, 10, anything you want to. Okay. And the radius also remains the same. Such a motion is called as a centripetal accelerated motion, where there is a force directed towards the center along the radius. So the radius vector, right? The radius vector and the velocity vector are always perpendicular. So there is a radius vector. Radius magnitude is again fixed. Can't change. Maybe 3 centimeter, 10 centimeter, whatever. But it's a vector because you're dealing with physics. Yes, sir. And the force which is directed towards the center, which keeps this whole thing in circle, because the tendency is to fly off tangentially. But the force that keeps this towards the center is there, and that is called as a centripetal force. Okay. Got it? Yes, sir. Now, if you are moving in a horizontal circle, I'm using the word horizontal again and again, okay? Yes, sir. Horizontal circle, and the nature of motion is uniform circular motion. The rule is, apart from covering some linear distance, for example, you were here and you reached here, your displacement is 2r, 2 times the radius. But you have also moved through an angle. So in this motion, what you do is you are covering angles also, right? So you are covering some angle always. That means this motion is also essentially is an angular motion. Okay, so this is the angle you're covering. Since you're moving with constant uniform velocity, you are covering equal amount of angle in equal amount of time interval. Okay, so also note that the length of an arc is given by radius multiplied by the angle covered. Okay, so if you've covered an angle theta here, you want to find the length of this arc. Theta should mean radians. You can find the length of the arc. So this is very important. And since we generally study in a very short time intervals, we are talking about a very small angular movement and a very small
Wait. So this is very small arc, which is equivalent of saying that we have moved through an angle d theta. If you move through an angle d theta, you've also covered a dx arc. Hmm. Right. So if you calculate that arc is equal to radius multiplied by d theta, divide both the sides by d. See on your left, सर आप what की you see आवाज is बहुत the ब्रेक हो। velocity. हेलो R into this. हेलो Is it better now? हेलो Rate of change. Am I audible? यस सर अब आई है, काफी देर Okay. से नहीं आ रही थी आवाज। Fluctuation हो रही है. So ये arc की definition है. This is arc. So this ठीक है। is the very small distance covered in very small time. Arc is equal to radius into angular displacement, which is this. हम्म अगर आप एक आर्क में मूव करोगे, ये आपका this is arc, this is d theta, this is r. So ठीक है। arc is equal to r into d theta. हम्म And now what I've done is I have taken derivative of both the sides with respect to time. ठीक है। Dx by dt, which is v instantaneous, is equal to r into d theta, which is omega instantaneous. हम्म Got it? यस सर। And now you know that since this is a uniform motion, instantaneous velocity, the magnitude सर wise, समझ नहीं आ they रहा। will remain the same. In a uniform motion, velocity. Okay. एक मिनट में राउटर को ऑन ऑफ करूं. ये सब बहुत ज्यादा कट रही है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं ऑडिबल नाउ. यस सर।
मैं गर्वित है, मैं ऑडिबल ना हूँ? यस सर। आई थिंक मैंने ऑन ऑफ करा है। टाटा का अच्छा, स्पीड वाज कमिंग आउट टू बी 4 Mbps, वो इसलिए ही दिक्कत आ रही थी। 200 Mbps से 4 Mbps, बताओ। हम्म, ऑलराइट, सो द what I've done is I've taken derivative on both the sides and got this. अच्छा ठीक है। ठीक है, if I see this is v instantaneous and this is the rate of change of angle with respect to time. हम्म। ठीक है, रेट ऑफ, वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यस सर। सो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर रेट ऑफ लीनियर डिस्टेंस चेंज होता है, लीनियर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम्म। माने एक्स बदलते हैं जब पोजीशन बदलती है यस सर। लीनियर मोशन में। हम्म। लेकिन अगर आप एंगुलर मोशन में हो तो एंगल बदलता है ना आपका। हाँ। This is theta and you've covered some angle d theta in d time. So your हम्म। displacement is no longer in meters but in angle. So your displacement in angle is called as angular displacement divided by dt, the time it takes to cover that. This quantity, the rate of change of angle with respect to time, is called as omega and is called as a angular velocity. ठीक है। Make sense? आया समझ में? हाँ बिल्कुल। तो ये अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो ओमेगा ही है ना ये। हम्म। तो हमारा जो बेसिक आ गया लेफ्ट पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये अज्यूम दिस टू बी वेरी स्मॉल। ओके। सो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही मान लो इसको। ठीक है। वैसे तो आर्क है ऐसी, बट दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी are so close that you assume them to be a straight line. ठीक है। So therefore I've used the word v instantaneous. Even though you have covered an arc, the displacement should have been this, right? सीधी। हम्म। ये तो डिस्टेंस हुआ ना, हाँ। बट ये इतनी छोटी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ही नहीं आ रहा। समझ गया। तो यू आर राइटिंग v इज इक्वल टू ओमेगा आर। हम्म। मेक सेंस नाउ? बिल्कुल। ठीक है, सो v इज दैट यूनिफॉर्म velocity which is tangent to the circle. Omega is the angular velocity measured in radian per second, and r, and this is also uniform, it does not change हम्म। in magnitude. Okay, ठीक है। radius of the circle. First equation in centripetal horizontal circle. Got it? यस सर। All right, now let's say the, so your velocity, I said, is a vector, right? So now we know that velocity is a vector, though magnitude is same. At all points on the circle. 4 मीटर पर सेकेंड। बट अब देखो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू सी इट एज अ वेक्टर एंड आई ड्रॉ एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हेयर, you will realize yourself कि यार ये तो this is, for example, this is your y axis, okay? Okay. Let's say this is your y axis and let me just say ये y axis आ गया, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने उसको, क्या? ठीक है। Let me also use, so that's your y axis, and let's say I have
an x-axis here. Okay, and so that's drawn like this. Okay. If you notice anywhere, the velocity vector, if you see the velocity vectors, so let's see, let me draw the velocity vectors using this. Okay. तो आप अगर velocity का कोई भी बनाते हो vector, let's say the velocity vector here is in this direction. It's only vertical. That means it only has a j, Yes, sir. right? Let's talk about the velocity vector which I'm drawing here. This is minus I, leftward. ये सिर्फ माइनस आई है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ -4i, Yes, sir. क्योंकि द मैग्नीट्यूड इज नोन टू मी. इसको लिख सकता हूं मैं 4j. इसको क्या लिखूं मैं, इस वाले को? K. 3D में नहीं है, 2D में ही है, j और i में ही है. I plus J. नहीं नहीं, इसको, ये वाले को. इट इज ओनली अच्छा, डाउनवर्ड, राइट? हाँ, तो -4j. ठीक. समझ गए ना क्यों? हाँ. So similarly, what you can do is you can draw any vector. You know, length will always remain same. Length will not change. You draw any velocity vector. For example, I draw a velocity vector here. Tangent बना दिया. So this has two components now. If you see, it has, you can break it down in x component and a y component. Any vector can be broken in two parts. Resolution of vector x and y. मतलब I and j. तोड़ सकते हो आप उसको. So you can draw as many vectors as you want to, all tangent to the. So this is also a tangent, right? And you can again break it down into two parts, x and y. Yes, sir. Right? Any vector. So what is happening? If you notice, this is what is happening. You have one, let's say you use another one. And now you have vectors on a circle, which can be broken down further into like this. So this was a vector. This was another vector, so on and so forth. ये वेक्टर बनते जा रहे थे, और आप इनको अगर ज्वाइन, ये टेंजेंट टू द सर्कल हैं सारे के सारे, राइट? ऐसे बनेंगे. यू कैन कंटिन्यू टू मेक देम. द पॉइंट इज कि आप अगर इनको वेक्टोरली देखोगे, वेक्टोरली, तो मैं आपको दिखाता हूं कि लेट्स गो बैक टू द पॉइंट. आई एम मार्किंग इट. ओके, लेट्स मार्क द पॉइंट and say this point is, ये वाला point लो, ये. Can you see this? ये वाला दिख रहा है? दिख रहा है? What you do, you call this point as some point. Tell me what is the velocity vector here. What should I write? 4j upward, 4j, right? तो मैं लिख रहा हूँ plus 4j. अब 90 डिग्री के बाद आई एम राइटिंग वन मोर. व्हाट शुड आई राइट? +4i. ठीक है? ठीक है. If you notice, this is what is happening. Let's draw a big circle here also. Okay? यहाँ पे भी सर्कल बना लेते हैं, उसका सेंटरिंग कर देते हैं यहाँ पे. Let's draw this circle like this. ये टेंजेंट है ऑलरेडी. ओके, ये सर्कल हो गया हमारा. Let's delete this.
So this is tangent to the circle at some point, and the 2 points which I had taken were these. Okay, I took one as this point. I am drawing this, and the other point I have taken is okay. We will have to shift the axis also. For example, is this is the other point. Yeah, so मैं इसको थोड़ा सा इस पे लगा देता हूँ और इसको मैं उठा के एंड दिस इज ये दोनों पॉइंट लिए थे मैंने. हम्म. If you notice, I have to find acceleration during this time period. Okay, so my acceleration generally, why does it acceleration happen? Acceleration happens because of rate of change of velocity. dv by dt, right? Correct. और तो कोई रीजन होता भी नहीं है, मतलब why should it change? हम्म. Okay, so d v why is this happening here? I have not selected. I have selected the eraser, then I've selected the pen. Okay. I am selecting the highlighter pen. Pen चुना है मैंने. हम्म. If I write, it becomes a triangle. What the hell is that? शेप होनी चाहिए, पता नहीं. Shape. Okay, I am on the shape. इसमें enabled तो नहीं है. हाँ है. Which one do I select to get rid of this? बस उसी पे क्लिक कर दीजिए तो वो ऑफ अच्छा हो जाएगा. ओके. हाँ आ गया. सो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी थी 4j. 4j. यहाँ मेरी वेलोसिटी थी 4i. If I have to calculate the acceleration, it will be 4i minus 4j divided by the time it takes to cover 1/4 of a circle. 1/4 of a circle ही cover हुआ है ना? हाँ. A to B में. So I write it as t 1/4. So do you see there is an acceleration, though the magnitude of the velocity is constant. Yet because of change in direction, we are getting some acceleration. Correct. है ना? So मतलब people will say your velocity everywhere is same. 4. How can you get acceleration? But we can. Change in the direction can result in acceleration. So in a circular motion, you have acceleration. Okay. In a circular motion, you have an acceleration due to change in direction. Generally हम ये करते थे v final minus v initial divided by t final minus t initial is equal to acceleration. But no longer. Now the magnitude is same, but vector wise, if you notice, the velocity vectors are completely different because they're in different direction. Magnitude is same, meter per second. Meter per second. So anywhere you go, you will find the 4, but you will see an entirely different direction. When I said you can break it down, this is what I meant. If I join these two lines, and I want to say I want to create the velocity vectors of these. So I create a velocity vector, I go on the x-axis.
Okay. So this is x component, Hmm. and then this is the y component. Okay. So the length is radius, right? Correct. ये रेडियस है. उसी तरह से अगर आप वेलोसिटी भी लेते हो, if you take a velocity which is perpendicular to the radius here, so this velocity is perpendicular to the radius. Let's say you draw this, and this is a 90-degree angle between them, the radius and the velocity. Let me draw it tangentially. Now it is touching properly. You can break this velocity also as a vector, which is in y-axis going down, and x-axis it is going like this. Right? So everything can be broken in x and y if you know the angle with the x-axis. तो इस velocity vector का अगर angle मालूम चल जाए कि वो क्या बना रहा है x axis के साथ, इस velocity vector की बात कर रहा हूँ मैं. Hmm. Right? Obviously, if you extend it downwards, you can find the angle also. If I take this particular vector, ये वाला, and if I see this one, the velocity vector, if I pull it down, I know what is the angle it is making with the x-axis. The angle is also known to me. Okay, so this is the angle which is known to me. Hmm. ये वाला भी ले सकते हैं. The negative angle it makes with the y-axis. So आप ठीक है. velocity vector को भी दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, radius vector को भी दो हिस्सों में तोड़ सकते हो. So these are the components of your radius vector. Two vectors, any two vectors can be broken down into two parts. Okay. Provided you know their angle. तो हमें ये angle पता होना ज़रूरी था यहाँ पे कि इस समय angle कितना बन रहा है, थीटा. थीटा बन रहा है, मान लो ये 4 मीटर है, सॉरी रेडियस 2 सेंटीमीटर है मान लो, ये तो 90 डिग्री रहेगा हमेशा, राइट? Correct. और ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है. सो इफ यू ड्रॉ एनीथिंग ऑन द एक्स एंड वाई कार्टेशियन सिस्टम and you say, okay, let's draw y-axis, let's draw an x-axis, and I have a vector which is going like this. Okay, let's draw the vector also, and it goes like this. जैसे कि velocity vector जा रहा था, I am making that velocity vector. तो ये मेरा velocity ऐसे जा रहा था vector. है तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर. मान लो इसकी लंबाई ये 4 मीटर है और इसकी डायरेक्शन जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है कहीं पे. वी ऑलरेडी नो दैट, राइट? तो ये जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर और रेडियस वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट इज 0. करेक्ट. ये भी हमें मालूम है, राइट? सो इफ यू नो द रेडियस वेक्टर इज गिवन एज ए आई प्लस बी जे. ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है. वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे. एग्जाम्पल, देन r डॉट v इज इक्वल टू 0 बिकॉज r एंड v आर परपेंडिकुलर. ठीक है. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ r and v in a circular motion is 0. We were, however, doing acceleration. Yes, sir. The acceleration is due to what? Due to change in the direction of velocity. ये वेक्टर क्योंकि बदलता रहता है, मैग्नीट्यूड फिक्स रखने के बाद भी, इसी वजह से रीजन है कि ये इट शोज दैट बिहेवियर, राइट? Although I'm not doing a derivation, but I will tell you what happens finally is that this acceleration which you calculated because of the change in velocity vector, although the magnitude wise both are identical, delta t comes out to be mv square by r. Very simple. You just need to write it vectorially. So this will come out mv square by r.
So this acceleration is called as centripetal acceleration. Second point is, so I'm not adding mass here, okay? So let's write v square by r only. This is the same 4 square, and this is the same radius, which is the 2 centimeter. So centripetal acceleration comes into picture because of a uniform circular motion in which v magnitude remains the same, but v vector keeps changing its direction. Okay. Got it? And the value, if you do a derivation of v2, this derivation, you will get the value as the centripetal acceleration is this, and its direction is also very interesting. It is always along the radius, directed towards the center of the circle. फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेक्टर्स होते हैं. यस सर. तो अगर आप ये v स्क्वायर बाय r देखोगे तो इसकी डायरेक्शन जो है it will look like this. At any point it will be directed at the center. समझ गया. ठीक है? So what you have done, what you have started with a uniform circular motion in which you said the velocity remains constant, but the magnitude keeps on changing. Sorry, the direction keeps on changing. And because of that, you have produced a centripetal force which is v square by r. And since your velocity is in a circle, you're also having an angular velocity which is omega. And the relationship between v and omega is v is equal to omega r. Which means if you move in a larger circle with the same angular velocity, your linear velocity is high. So if I have two circular motions, okay, I have two circular motions. For example, let me use this first motion. This is first, and I have another circular motion. Both are moving together, okay? Which means angularly they are together always. जैसे दोनों कट्ठे कट्ठे ही जा रहे हैं, right? So ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और दोनों कट्ठे, फिर ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे. एंगल दोनों का सेम कवर हो रहा है, right? ये सेंटर दोनों का कॉमन है. Got it? Yes, sir. But can you see the radius is bigger for one? So this radius, and compare this with this radius. Sorry, not this one. This is not the radius we are comparing with. We are comparing with this radius. छोटे वाले का. Compare these two. So angle wise they have moved the same, identical. Right? ये भी यहाँ से आर्क में गया, Yes, sir. और वो भी उतना ही आर्क का डिस्टेंस. एंगल दोनों का सेम है, दोनों ने एक ही आर्क का एंगल, थीटा सेम है दोनों का. ऑब्वियसली इसका रेडियस R1 का बड़ा है और R2 का छोटा है, तो आर्क लेंथ जो छोटे सर्कल की है वो छोटी होगी और बड़े सर्कल की बड़ी होगी, है ना, आर्क. बट पॉइंट इज दोनों का जो अगर कंपैरिजन करें फॉर द सेम ओमेगा, if I write v is equal to omega r and both are moving with same omega, then the velocity is proportional to radius. Bigger the radius, bigger is the linear velocity, instantaneous linear velocity.
because V is equal to right. So V1 by V2 is equal to R1 upon R2. So bigger is your radius, bigger is your linear velocity. So if you see multiple bodies going in the circle together angularly, so angle wise सब same चल रहे हैं. एक और maybe you can have one more track and cars are moving together. All the cars are moving together. Right? So let's see there is another car and they decide कि हम इकट्ठे ही चलेंगे लेकिन angle पे. ठीक है. So you have one more vehicle which is available to you and it moves in a circle with you. That also is moving alongside. उसका radius तो सबसे बड़ा हो गया. So which means उसकी velocity सबसे बड़ी है. If omega is common for them, वो भी ऐसे ही चल रहा है इकट्ठे. तो एक टाइम पे तीनों हमेशा straight line में होते हैं. At any given point of time, they are always in a straight line. So ये वाली situation की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है जो तीसरी कार है वो यहाँ पे available है आपको. Right? तो हमें ये वेक्टर जो मैंने बनाया है इसको थोड़ा improve करना पड़ेगा. Let's see. So this vector, दूसरे का जो वेक्टर है वो ऐसे है. तीसरे का दिख रहा तीनों एक लाइन में. ये वाला देखो, ये वाला I can extend it and draw it like normal. ये तीसरी कार जो है इकट्ठे स्टार्ट होते हैं तीनों सर्कल में ट्रैवल करना. ये देखो ये तीसरी कार है. So this is your car number A, car number B and car number C. A, B and C. And then this is your car number A which reaches here covering this much arc. Then your car number B has reached here and your car number C has reached. So देखो angle wise तीनों उसी पे हैं. तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है. राइट. ऑब्वियसली ये थोड़ा सा R2 का जो ये वाला बना हुआ है थोड़ा गलत है लेकिन कैन ऑलवेज करेक्ट इट. I'll just show you. इसको भी मैं यहाँ बना रहा हूँ. ये वाला जो वेक्टर है ये वाला ये बेसिकली यहाँ पे है. सबका देखो इस समय जो वो है along the radius कॉमन है. They're collinear, right? Car number A is there, started from here. This is end. So this is B car. It has reached here, and it is so C car. So if you see the angles are common. So theta is same for all. Their angular displacement is common, but do you see the arc is different for each one of them? Arc length. पहले की तो सिर्फ इतनी सी है, दूसरे की इतनी और तीसरे की ज्यादा. तो सेम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसकी है? सबसे ज्यादा बड़ी आर्क किसने कवर कर ली? सी ने. सेम टाइम में. टाइम तो सेम ही लगा ना, बस सर्कल है इसलिए. तो एंगल सेम रख के को लीनियर ही रहे आपस में. और थोड़ी देर के बाद आपने देखा फिर से मतलब क्योंकि यूनिफॉर्म है, ओमेगा सबकी सेम है. जब भी आप देखोगे तीनों के तीनों जो हैं दे आर मूविंग इन अ सेम collinear era. ABC. Again they are ABC. They have covered equal angle and this angle probably this time is this much. ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप एक थीटा का और भी समझ लो आप ओमेगा का. देखो ओमेगा इज बेसिकली the rate of change of angle. Okay, when omega is uniform, mane you cover same angle in same time interval.
तो थ्रू आउट ओमेगा रिमेन्स द सेम, जैसे तीनों कारों का ओमेगा सेम था, तीनों सेम टाइम में सेम थीटा कवर कर रही थी. Omega was identical for them, right? Now, the time taken to cover one circular path, one circumference completely, is called as time period. The time taken to cover one complete circular path is called as time period. इसको बोलते हैं कैपिटल टी. तो आप देखो ओमेगा क्या होता है, थीटा कितना होना चाहिए टी के लिए, 2 पाई. Yes, sir. In one round you will cover only 2 pi radians, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाओगे. Okay, this is a formula that links the angular velocity with time period of revolution. ये seconds में ही होगा. And this is also written as, where f is the frequency of revolution. Okay. So time period means in one time period how many revolutions you cover? 1. In t time, how many revolutions do you cover? So in 1 second, how many revolutions will you cover? The number of revolutions a body covers in 1 second is called its frequency. So if I tell you a body has a time period of 0.01 seconds, 0.0 सेकेंड में वो एक चक्कर लगा लेती है. ठीक है. तो एक सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगी? 100 revolutions per second. So frequency is a measure of number of revolutions per second, and mathematically is inverse of the time period. So if we were to write it, omega is the angular velocity of the body, ठीक है? Then omega is given by 2 pi by t. Basically we're writing theta by t, and t is the time period of one revolution. मैं deliberately वो words बोल रहा हूँ. 2 pi is the total angular displacement. In time period t, and this is in radians. And t is coming out to be 1 upon f, where f is the frequency of revolution. Okay. Which means number of revolutions in 1 second. इतना लंबा नहीं बोलने की जरूरत. Number of revolutions in per second. Just say this. It is same as number of revolutions
per second. It is one and the same thing. ये थोड़ा बोलने में लंबा है ना. So if you notice, frequency can be written as 1 upon time interval. This is in seconds. This is in seconds, and therefore this t, which is written in seconds, so frequency is written in second raised to power minus 1. And you don't need to write s minus 1, you can just write 1 hertz. It is also written in hertz. Right? So if you were given omega is equal to 2 pi radians per second, and it's a uniform angular velocity. So this is uniform angular velocity, does not change. And your given radius is equal to 5 centimeters. The question is, what is the magnitude of the linear velocity of this uniform circular motion? ये दिया है कि uniform circular motion है. So V is equal to omega r is equal to 2 pi multiplied by 5 by 100 is equal to 10 pi divided by 100 meter per second. Second question, what is the centripetal acceleration being experienced by the body? Meter per second square. Directed towards the center, remember. Along the radius, directed towards the center. And the source, for example, can be tension in the string for a horizontal circle. Okay. बच्चे भी झूला खाते हैं तो मदर्स उनको धक्का देती हैं. Yes, sir. ये झूला होता है पार्क में ऐसे, right? This is the, and children are standing. Mother pushes this and children undergo a circular motion. They also experience an inward force. So if you keep a block here, you will see it sliding, because if the it is able to overcome the force of friction. So okay, so there has to be a source of centripetal force. It is not a force which is like a push or a pull. You need a source. So tension is a source. Tension is a source and provides V square by R. Can. So you need a source. We'll get into details of centripetal acceleration later. But for the timing, just get acquainted with the formulas. Okay. What is the, for example, I tell you 2 pi. So what is the frequency of revolution? So, okay, omega is equal to 2 pi by t is equal to 2 pi by f. 2 pi is equal to 2 pi into f. So my frequency of revolution is 1 hertz. Got it? Yes, sir. All right. So you have learned new words. One is the fact that you have a linear velocity in a circular motion which is tangent to the radius, or sorry, perpendicular to the radius but tangent to the circle. Second, you have learned a uniform circular motion also has a uniform angular velocity given by this formula, which is time period of revolution or the frequency of revolution, which is number of revolutions per second. And you've also learned that the centripetal acceleration, which is always directed towards the center of the circle, is equal to V square by R. You've also learned that V vector is perpendicular to R vector. Therefore, V dot R, the dot product will always come out to be 0. And you've also learned that V can be broken down into Vx and Vy. And radius can also be broken as Rxi and Ryj. If you take the dot product of these two vectors, you will get answer to be 0. So the centripetal force for this question can be calculated as 10 pi by 100 square divided by radius, which is 5 by 100. Solve it, you will get meter per second square. Okay, the units of omega are radian per second.
omega is equal to theta divided by t. If theta is 2 pi, then the time it takes to cover 2 pi, which is a full circle, is called as a time period. Can also be written as 2 pi f, where f is a number of revolutions per second. So the relationship between f and t is this. Okay. Okay, digest this, and tomorrow what we will do is practice. Your assignment ठीक है. for the day is please complete all the neat questions ठीक है. for projectile. If you're doing it, do it with a full heart. That you have to score in JEE. Yes, sir. Then if once you complete it, I will take you towards the JEE mains. See, first get comfortable. You are pretty comfortable with the formulas. You have a grip on them. Dikh gaya mujhe. But develop some more grip by practicing neat questions and then move to JEE mains. ठीक है, sir. Right? And get that 2024 edition immediately for maths, because now we will follow that book for daily practice. We have to do, if I cover a topic like increasing, decreasing, then from that source you have to complete the increasing and decreasing, all tick marks done. Otherwise you will forget. So I will make a chart now of your physics and maths for 11th and 12th, and I will mark there what have you completed on your own in terms of assignment, and then I will tell you when we will take the test. ठीक So है. today evening what we will do, we will discuss your paper of electrostatics, Okay, chapter sir. 1. And in the meanwhile, please complete the second chapter, capacitance and electric potential also. Because we have completed chapter 3 and you must be very comfortable with chapter 2. Once you say I am practiced, I will take a test for chapter 2 also. Then I will Okay, make a chart, because I think you're comfortable now. Although it's not easy to do both the classes together, but there is no choice. We have to take test and we have to see where we stand. Yes, sir. Okay? And you will keep on getting questions anyway on your Telegram.